Okay, I'm recording this session over here. So this session is about discussion of how to write an essay in which it is very clearly mentioned that whether advantages outweigh disadvantages or disadvantages outweigh advantages. Many students were asking me, sir, that we are not having clear idea about how to write an advantages outweigh disadvantages essay. Now, before we jump into that part, let me give you a small, knowledge, or let me explain you a few things about advantages, disadvantages essay. As you all know that the essay types, there are 4 to 5 types of essays in IELTS, but among one of them is advantages, disadvantages essay. And in advantages, disadvantages also, there are 3 types of essays that comes. So very, very important for you people to understand this. IELTS advantages and disadvantages questions normally give you a statement and ask you to comment on the advantages and disadvantages of that statement. Now, the problem is that there are 3 different types of advantages and disadvantages essay, and they each require a different approach. So you need to understand that each and every type of essay is going to be having different approach. You cannot have the same approach for advantages, disadvantages, advantages, disadvantages, and give your opinion, and finally whether advantages outweigh disadvantages. तो हर एक के लिए आपका जो approach है is going to be somewhat different. And if you do not follow the basic guidelines of writing these 3 types of essays, you probably would not be able to get marks on task achievement and cohesion and coherence. This lesson will look at each of these 3 question types. I'm not going to discuss all the 3 question types today. I'm going to focus more on advantages outweigh disadvantages. But before that, I am going to give you small examples of how the different types of advantages and disadvantages essay would look like. There will also be sample answers, but I'm not going to discuss on that part. But let me first of all understand the 3 basic types of advantages and disadvantages essay. I hope you are all there. Is my voice audible one last time? Are you able to understand what I'm trying to say? We are taking advantages, disadvantages essay. Everybody, I want a very, very strong, responsive class. Very good. You people are very, very responsive. Okay, great. So there are 3 different types of essays. So let me first of all take the first type of essay. Just listen to this very, very carefully. Let me take the first type of essay. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decided to do this. काफ़ी कंट्रीज़ में यंग पीपल को एनकरेज किया जाता है कि अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी स्टडी स्टार्ट करते हैं और हाई स्कूल ख़त्म करते हैं, उसके पहले they are encouraged to work or travel. You know that this is very, very common thing, common phenomenon in number of foreign countries. यहाँ पे ऐसा नहीं है बैचलर्स के बाद हम सीधा ही मास्टर स्टार्ट कर देते हैं या तो फिर 12th के बाद सीधा ही बैचलर स्टार्ट कर देते हैं. तो डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर यंग पीपल हु डिसाइडेड टू डू दिस. तो इस ऐसे में आप देख सकते हो कि यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. You are not required to give your opinion. So this question simply asks us to discuss the advantages and disadvantages. It does not ask for your opinion or say which side is better or worse. So we should not include this information in our answer. This requires a simple structure in which student will look at the advantages in one paragraph and the disadvantages in the other. तो मैं वापस दोहराना चाहूँगा, अगर IELTS का ऐसे है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांटेजेस लिखे एडवांटेजेस के बारे में पूछा है एंड यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट द डिसएडवांटेजेस एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन, यू डोंट नीड टू गिव योर ओपिनियन. अगर आपने होशियारी करके अपना ओपिनियन दिया, यू आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग अ ग्रेट स्कोर फॉर दैट. The essay structure then becomes very, very simple. The first paragraph is going to be introduction. Second paragraph is going to be advantages. Third paragraph is going to be disadvantages. And finally, the conclusion. It is as simple as that. I hope these things are very clear to you, students. I am not giving you the format right now. I am only explaining you what to be done in this type of essay, wherein you are only asked about advantages and disadvantages. Okay. जो दूसरे टाइप का ऐसे है उसमें ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस विल कम. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू बिगिन
learning a foreign language at primary schools rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? Now this is where I am going to explain you. So you don't need to understand this. You just need to, एक ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऐसे में आपको ये पूछा गया है, some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary schools rather than secondary school. So primary school में ही they should start learning the foreign language. For example, काफी schools में, ICSC schools में you will find out students learning French, students learning Spanish language at a very young age. This is basically done at a primary level. मतलब 1 to 7 8 स्टैंडर्ड में ही हो जाता है ये. सेकेंडरी लेवल में, सेकेंडरी स्कूल में नहीं, 1 to 7 में ही हो जाता है. So do the advantages of this outweigh the disadvantages? Now I am going to discuss this type of essay today in detail. But before I do that, let me explain you कि यहाँ पे आप balanced essay नहीं लिख सकते. You need to specifically mention कि क्या advantages का पल्ला भारी है in comparison to disadvantages. So you need to specifically write in your essay whether you believe that the advantages are more than the disadvantages. I'll come to the format of this type of essay at the later, after I complete the third type of essay. But ये दूसरे टाइप का ऐसे है. पहला जो टाइप था वहां पे आपको सिर्फ एडवांटेजेस एंड सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिखने थे. ये दूसरी टाइप का ऐसे है जहां पर आपको ये पूछा जाता है कि वेदर द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. उल्टा भी हो सकता है, डू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द एडवांटेजेस, ऐसा भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ऐसे. ऐसे केस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन इज डिफरेंट and we have to say if the advantages are stronger than the disadvantages. Notice I didn't say if there are more advantages than disadvantages. The question is not asking you to talk about numbers but comment on the overall weight of the advantages or disadvantages. आपको ये लिखना नहीं है कि इसमें 2 डिसएडवांटेजेस है और 5 एडवांटेजेस है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. बट ओवरऑल क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एडवांटेज टू ट्रैवलिंग बाय प्राइवेट जेट. शायद अगर कोई ऐसा ऐसे है कि प्राइवेट जेट में एडवांटेजेस आप ट्रैवल करते हो तो उसका पल्ला भारी है एडवांटेज का या कंपैरिजन टू डिसएडवांटेज. बट अगर एडवांटेज में ऐसा है कि प्राइवेट जेट में टाइम इज सेव्ड बिकॉज यू डोंट नीड टू वेट इन द लॉन्ग क्यूज. But at the same time, there is a huge disadvantage. The cost, जाहिर है, when you travel by a private jet, the cost is going to be enormous. So that stops people from flying the way, and therefore the disadvantages outweigh the disadvantages. So this is one of the things that you need to understand. In this example, we have to decide which side, advantages or disadvantages, is stronger, and this will affect our structure. If you choose advantages, then you will have to say why these are more stronger than the disadvantages and why the disadvantages don't hold much weight. We would also have to make this clear in your thesis statement. तो इंट्रोडक्शन में जो आप लिखते हो उसमें पहला जो पैराग्राफ, पहली जो लाइन होती है और दूसरी लाइन जिसको हम बोलेंगे, वहां पे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वेदर द एडवांटेजेस, द साइड ऑफ एडवांटेजेस और एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस. तो ये थीसिस स्टेटमेंट मतलब के इंट्रोडक्शन में दूसरी लाइन में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि विच साइड मीन व्हाट इज मोर in weight, advantages or disadvantages. Okay, now this is the third type of essay in advantages and disadvantages. Let me share you an example with this. Computers are becoming an essential part of school lessons. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. तो यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना जरूरी है. So let me clarify all the three types once again, but before I do that, let me explain you इसमें क्या करना है आपको. This question is different again because it is more like a discussion essay. आपने शायद डिस्कशन ऐसे किए होंगे जहां पे आप ऐसा आता है कि डिस्कस एंड गिव योर ओपिनियन. सो यू कैन कंपेयर दिस दैट essay with this type of essay जहां पे advantages and disadvantages and you are required to give your opinion. Your structure will reflect this by having a paragraph for advantages and disadvantages. तो पहला जो पार्ट ऐसे का टाइप था जहां पे आपको सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है, वैसा ही होगा. But in the thesis statement over here, you are required to give your clear opinion कि आपको क्या लगता है कि what do you believe is better, आपके लिए क्या है, and give your opinion, आप क्या मानते हो इसको. So it is very very important for you to understand all the three types of essays. I repeat, the first type of essay was
गिविंग ओनली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आप एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज दे सकते हो. Introduction and finally conclusion. You are not required to give your opinion. That was the first type of an essay. Second, outweigh wala essay, I'm going to discuss that part today itself. So I'm not going to throw more light on that. But the third type of an essay is wherein you are required to give your opinion. तो आपको अपना opinion भी देना पड़ेगा. You can compare this essay with discussion and give your opinion. Okay. Any doubts? I hope this is clear to everybody. Yes or no? Is it clear to everybody all the three types of advantages, disadvantages, essay? Yes or no? Okay, great. Great. Thank you so much. Okay. Now I am going to discuss the essay which I gave you in your examination. मैंने एग्जाम में आपको essay दिया था, and this was the essay that I gave in the real examination that I took on Saturday. And I hope many students wrote it and gave it to me. So this was an essay that I gave to the students. Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? मतलब अगर प्राइमरी लेवल में अगर हम लोग फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस का पल्ला इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस भारी है या नहीं? Now in this type of essay, I'll just show you a basic structure. मैं पहले आपको एक स्ट्रक्चर सिखाता हूं. फर्ज कीजिए कि you believe that advantages are more than the disadvantages. If you believe that advantages are more than the disadvantages, तो स्ट्रक्चर ऐसा होना जरूरी है. The first is going to be an introduction. आपको लगता है कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है, तो आप स्टार्ट कीजिए डिसएडवांटेज से. मतलब इन बॉडी पैराग्राफ 1 यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द डिसएडवांटेज. याद रखना कि बिकॉज यू बिलीव दैट एडवांटेजेस ज्यादा है, आप एक ही डिसएडवांटेज लिखोगे. यू कैन नॉट राइट टू मेनी डिसएडवांटेजेस बिकॉज यू बिलीव दैट एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस. तो आप बॉडी पैराग्राफ में एक ही डिसएडवांटेज लिखोगे. इन बॉडी पैराग्राफ 2 मतलब ऐसे का तीसरा पैराग्राफ, you are going to write one advantage. Ideally it is more suitable that you write two advantages and followed by conclusion. Now यहाँ पे थोड़े वेरिएशन पॉसिबल है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. अगर आप मानते हो कि एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस, या तो फिर यू बिलीव दैट एडवांटेजेस आउटवे मतलब उसका पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस, तो आप बॉडी पैराग्राफ 1 में डिसएडवांटेज लिखोगे. ये सही तरीका है. Finally, in body paragraph 2, you can write one advantage, and you can also have body paragraph 3 to write the second advantage, and finally conclusion. Logically, it is much more preferable that you write more advantages in comparison to disadvantage, because you believe that there are more advantages outweigh disadvantages. Now, as I have told you, you can even write body paragraph 2 and body paragraph 3 for mentioning two advantages. लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ऐसा करने से बहुत लंबा ऐसे होने की संभावना है. Assuming that you are going to write 80 to 90 words in one paragraph, then the total length of the essay could come down to 350 words. ऐसे केस में बेहतर ऑप्शन ये भी है that you write introduction, body paragraph 1 you write disadvantage, and in body paragraph 2 you write two advantages at the same time, finally followed by conclusion. I repeat, introduction. अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेज, देन यू शुड राइट बॉडी पैराग्राफ 1 में आप डिसएडवांटेज से स्टार्ट करोगे. आई रिपीट, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेजेस आर मोर देन एडवांटेजेस, then in body paragraph 1 you are going to start with advantage, and then in body paragraph 2 or body paragraph 3 you are going to write disadvantages, finally followed by conclusion. I hope these things are clear to you. Is it possible or not? Have you understood what I am trying to say? बहुत सिंपल है. छोटा बच्चा अगर तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता है, मैं ऐसे समझा रहा हूं कि उसको भी पता चलेगा. You don't need to have any basics to learn this. You don't need to, and I am trying to make sure that you understand each and every possible thing that that comes. Any questions, any doubts? Very clear. ये बेहतर है. This is the right way to do it. Is it getting clear? Okay. Now I am going to explain you the introduction. पहले introduction के लिए पहले ये समझ लीजिए. I want you to read this essay once again. Some experts believe that it is better for children
टू बिगिन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल रादर देन सेकेंडरी स्कूल। ये आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू हैव ऐसे एट द साइड व्हेन आई एम डिस्कसिंग द बॉडी पैराग्राफ्स। बहुत लोग, काफी एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ही फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाए रादर देन टीचिंग दैट इन सेकेंडरी स्कूल। क्या आपको लगता है कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एट ए प्राइमरी स्कूल इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस? अब मैं ये कहता हूं कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है, तो जाहिर है आई एम गोइंग टू फॉलो दिस फॉर्मेट: इंट्रोडक्शन, डिसएडवांटेज, इन बॉडी पैराग्राफ 2 आई एम गोइंग टू राइट 2 एडवांटेजेस एंड फाइनली द कंक्लूजन। Now let us try to understand the format. ये इंट्रोडक्शन है। पहली लाइन जो होगी is going to be the paraphrasing of the essay topic. जो बोल्ड वर्ड्स है, you can utilize this in any advantages outweigh disadvantages वाला ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। It is recently seen, please try to read this very very carefully. अगर कोई बच्चे को नहीं पता ऐसे कैसे लिखा जाए तो भी वो समझ पाएगा। It is recently seen that many schools make students to learn a foreign language from as early as primary education and before they reach high school. तो मैंने क्या किया, जो ऐसे का टॉपिक था उसको पैराफ्रेज करके यहाँ पे लिख दिया। ऐसा देखा गया है कि काफी स्कूल्स बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है फॉरेन लैंग्वेज और हाई स्कूल रीच करने से पहले। अब आई एम ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट क्लियर कि क्या लगता है कि एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है, आउटवे है। while there are few disadvantages of this trend such as paucity of time for physical activities, एक डिसएडवांटेज ऐसा है फॉर एग्जाम्पल कि आपको टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि आपका पूरा टाइम जाएगा लैंग्वेज सीखने में और आपके बेसिक जो सब्जेक्ट्स है उसको सीखने में। तो आपके पास पॉसिटी का मतलब होता है स्केर्सिटी। सो स्केर्सिटी ऑफ टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स एडवांटेजेस लाइक, मैं ये मानता हूं, मैं आर्ग्यू करूंगा कि उसके एडवांटेजेस लाइक रैपिड लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स मोर देन कंपेंसेट फॉर एनी डिसएडवांटेजेस। भले एक डिसएडवांटेज इसमें यह है कि आपको टाइम नहीं मिलता फिजिकल एक्टिविटी पे स्पेंड करने के लिए, लेकिन उसके दो बड़े एडवांटेज, जैसे कि आप उसको जल्दी सीख पाओगे। बच्चा छोटा है तो लैंग्वेज नहीं सीखेगा तो ही विल बी एबल टू लर्न फास्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रैपिड लर्निंग, और उसकी एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होगी। ये जो डिसएडवांटेज है, वो जो डिसएडवांटेज है उसको वो कंपेंसेट कर देते हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। याद रहना है कि इन द थीसिस स्टेटमेंट यू शुड मेंशन कि कौन सा एक छोटा सा डिस्क्राइब करना है उसको, सॉरी पॉइंट आउट करना है। यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब हाउ दिस इज द डिसएडवांटेज। आपने सिर्फ पॉइंट आउट किया कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा टाइम आपका ये सब चीजों सीखने में जाएगा। और उसके दो डिसएडवांटेज याद रखना है कि आपने यहाँ पे जो डिसएडवांटेज और दो एडवांटेजेस मेंशन किए हैं, they should be mentioned only in the body paragraphs. You cannot have another disadvantage or another advantage in your body paragraphs. Is it clear? I hope you have read this introduction and let me know if it is clear. I'll now move on to the second slide. Is it clear, everybody? Yes or no? Very very important. Clear, students? Yes or no? Go through it. Very good, very good. Thank you so much. नाइस, इसको ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द सेकंड पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू गो टू द सेकंड पैराग्राफ। मुझे बताने का कष्ट करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एडवांटेज लिखेंगे या डिसएडवांटेज लिखेंगे? आई टोल्ड यू बिफोर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, what I am going to write over here, advantage or disadvantage? Very good, we are only going to write the disadvantage. Exactly, we are only going to write disadvantage, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है, इसलिए मैं डिसएडवांटेज से स्टार्ट करता हूं। एग्जैक्टली, एवरीबॉडी नोज नाउ। ओके, एक ही डिसएडवांटेज मेंशन करूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर डिसएडवांटेजेस। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद टीचिंग अ सेकंड लैंग्वेज टू यंग चिल्ड्रन is that it is often hard to keep their attention and there is overload of other subjects to study. एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके पास एक अटेंशन रखना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उनके पास काफी अलग सब्जेक्ट्स का भी ओवरलोड रहता है। This is because of the immense load of studying other subjects like maths and science, and hence learning a new language will definitely overburden students
and they will spend lesser time in sports. क्योंकि वो लोग मैथ्स और साइंस भी स्टडी करते हैं, ऐसे केस में उसका बर्डन तो है ही, लेकिन अगर हम नया सब्जेक्ट उस पर डालते हैं जैसे कि नई लैंग्वेज, तो उनको बहुत कम टाइम मिलेगा स्पोर्ट्स पे स्पेंड करने के लिए. अब मैं एग्जांपल देता हूं. इन द रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर, it was found out that time spent by students on physical activities decreased by 23%. ये एक सर्वे हुआ था, इसमें मैंने कोई ब्लफिंग नहीं किया है. Decreased by 23% because of studying too many subjects at a time. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, at a time, at one time भी लिख सकते हो आप. So I repeat, वेस्टमिनिस्टर में ऐसा सर्वे हुआ था कि अगर बच्चों को ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, अगर टाइम पढ़ाने के लिए फोर्स किया जाता है, तो वो 23% टाइम अपना फिजिकल एक्टिविटी में कम स्पेंड कर पाएंगे. So you can see that I have only mentioned 3 lines. The first is the topic sentence. Second paragraph में मैंने ये explain किया. Finally followed by an example. Now I am going to write the body paragraph 2, जिसमें मैं 2 advantages mention करने वाला हूं. और यहां पे याद रखना है आपको, you don't need to write 6 lines in one paragraph. You can dedicate 2 lines for each advantage. I repeat, you can dedicate 2 lines for each advantage. तो यहां पे इस body paragraph में I am going to write 2 advantages. On the other hand, जाहिर है ऊपर disadvantages है, तो I can always have on the other hand a paragraph, I mean a phrase that I can utilize, because I am now putting the contrasting view. There are benefits to learning a language at preschool. First of all, children are more likely to become fluent in a second language if they start to learn it at a young age. This is because young children have greater neural plasticity. दिमाग जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, which means that they can learn new skills such as secondary language or second language more effectively than when they are older. बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनकी दिमाग की न्यूरल प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो कोई भी नई चीज अगर सीखते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर ओल्डर. तो ये उसका एडवांटेज है. पहला एडवांटेज इज दैट they can learn this new language faster than they can learn when they are older. ये पहला एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज, अनदर अपसाइड. देखिए मैंने कितने सुंदर फ्रेज का इस्तेमाल किया. अनदर अपसाइड मतलब दूसरा एडवांटेज. रादर देन सेइंग अनदर एडवांटेज, आई एम सेइंग अनदर अपसाइड. और यहाँ पे भी ऊपर मैंने सी आई हैव नॉट मेंशन एडवांटेजेस, आई हैव यूटिलाइज सिनोनिम ऑफ एडवांटेज, जिसको हम कहेंगे बेनिफिट्स. तो अनदर अपसाइड टू लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज बिफोर हाई स्कूल is that it improves other cognitive abilities. Cognitive मतलब दिमागी, जिसका cognitive मतलब it is related to knowledge, it is related to wisdom, उसको cognitive कहेंगे. In fact, it has been shown that children who learn a second language at a young age have better problem solving and critical thinking skills, enhance memory, ज्यादा मेमोरी हो जाती है, and tend to be more creative. ऐसा देखा गया है, it is shown, it has been shown, बच्चे जो सेकेंडरी लैंग्वेज बचपन से ही पढ़ना चालू करते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और उनकी मेमोरी भी एनहांस हो जाती है और वो बच्चे ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं. सो यहाँ पे आई हैव मेंशन 2 एडवांटेजेस. नंबर 1, इट इज देयर एबिलिटी टू लर्न थिंग्स फास्टर, जिसके लिए फायदा ये रहेगा कि वो चीज न्यूरल प्लास्टिसिटी अच्छी होती है उनकी. दे कैन लर्न थिंग्स फास्टर इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज. एक तो पहला एडवांटेज. दूसरा, दे हैव गॉट, ऐसा देखा गया है कि दोज हु लर्न लैंग्वेज एट अ प्राइमरी लेवल आर हैविंग बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और उनकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन एंड इफ यू गॉट एनी डाउट्स यू लेट मी नो. बट एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि यू कैन सी दैट आई हैव मेंशन 2 एडवांटेजेस इन वन पैराग्राफ. लेट मी टेल यू, यू कैन हैव 2 सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर मेंशनिंग ईच एडवांटेज. बट मैंने कहा वैसे if you write a separate paragraph then there is a small likelihood that the size of the essay might increase considerably. So this becomes easier for you. ये easy हो जाता है. Is it getting clear, understood or not? Then I'll move on to the conclusion part. धीरे धीरे करना है लेकिन important है because outweigh वाले ऐसे बहुत आते हैं. Let me tell you students that outweigh advantages, outweigh disadvantages वाले ऐसे बहुत आते हैं.
हाँ, अवॉइड कर सकते हो, यस, ओके, यू कैन अवॉइड एन एग्जाम्पल, बट बेटर टू गिव। देखिए यहाँ पे दो एडवांटेज है, दोनों में ही आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, इट इज नॉट बेटर। सो इट इज मच मोर एडवाइजेबल कि ये दो एडवांटेज दे रहे हो, उसमें से कोई भी एक एडवांटेज में एक एग्जाम्पल देना अच्छा लगेगा। दोनों में ही आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो एक अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड रिकमेंड यू टू गिव एन एग्जाम्पल। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? लेट मी गो ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट। In conclusion, the disadvantages to learning a foreign language at preschool are fewer. Fewer मतलब कम है in comparison to the advantages, as I firmly believe students will have a greater chance of becoming fluent if they are exposed to the learning language at a very young age. Hence, learning a foreign language from early age is a welcome idea. भले ही एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेजेस का पल्ला भारी है। अगर वो ज्यादा, इफ दे आर एक्सपोज टू लर्न अ लैंग्वेज एट ए वेरी यंग एज, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये मानता हूं कि फॉरेन लैंग्वेज अर्ली एज पे सिखाई जाने वाली चीज एक वेलकम आइडिया है। Any questions, any doubts? I hope the conclusion is clear. And let me now move on to the entire essay put down in one page. Can you tell me how many lines I have written? I have just written, 2 plus 3 plus 4 plus 2. So 5 plus 4, 9 plus 2, 11 lines I have written for the entire essay. पूरे essay में 11 से 12 lines है. Any questions? You can take a screenshot of this, my dear students. ये बहुत important है, और मैं चाहूंगा कि जब भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आता है, यू कैन फॉलो दिस गाइडलाइंस। मैंने बताया वैसे इंट्रोडक्शन जिसका पल्ला भारी है उसके विपरीत सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। देन इन द थर्ड पैराग्राफ यू कैन राइट बॉडी पैराग्राफ 2 यू कैन राइट 4 लाइन्स by showing 2 advantages or 2 disadvantages depending upon the side you have selected, finally followed by conclusion. I hope advantages outweigh disadvantages कैसे लिखना है must be very very clear to you. Yes or no? You can take a screenshot of this now. Clear everybody? Okay, शांति से, take your time students, nothing to worry. Important है कि क्वालिटी दिमाग में घुसनी चाहिए. I don't want to go for quantity. Clear? Okay. Introduction part में example, no, it is the same thing, Akanksha. If you see, it is basically the same thing. More or less, it is basically the paraphrasing. Conclusion is the paraphrasing of introduction. So it's one of the same thing. Don't worry. You don't need to give another example. Okay. Now I'm going to teach you one very important thing. आपने देखा होगा कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में अगर आपको लिखना है कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है या डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है, तो उसके लिए मैं आपको एक अंदर सुंदर सी लैंग्वेजेस देता हूं. For example, हमने this is what we have written in the introduction. It is recently seen that many schools make students to learn a foreign language from as early as primary education and before they reach high school. Now, this is the phrase that you need to memorize. While there are few advantages of this trend, such as जो भी है, I would argue that its advantages like जो भी है, क्योंकि this will vary from essay to essay, more than compensate for any disadvantages. So technically speaking, you need to memorize this. While there are few disadvantages of this trend, I would argue that its advantages more than compensate for any disadvantages. I hope this is clear, everybody. क्योंकि बीच में जो डार्क बोल्ड वर्ड्स है उसके बीच का जो है पार्ट is going to vary with essay, from with every essay that you are going to have. But the bold words you need to memorize. I hope this is clear what I'm trying to say. Yes guys, clear what I'm trying to say? ये जो bold words है आपको memorize करने पड़ेंगे whenever there are topics, whenever there is an essay on advantages disadvantages. ठीक है, अब यही एक तरीका नहीं है लिखने का. I am going to show you 4 different ways, 4 to 5 different ways. ये बहुत अच्छा है. अगर एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस या वाइसा वर्सा जो भी आता है, तो आप ये 5 फ्रेजेस में से भी किसी भी एक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो. इन माय व्यू, द ड्रॉबैक्स ऑफ दोस चेंजेस आर मोर सिग्निफिकेंट देन द बेनिफिट्स. बहुत सुंदर वर्ड्स फ्रेजेस है. आई वांट यू पीपल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर वेरी गुड फ्रेजेस. अगर एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आता है तो यू कैन यूटिलाइज एनी वन ऑफ दिस फ्रेजेस. मैंने यहाँ पे तो एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था, पर उसके अलावा ये भी कर सकते हो आप. While there are some advantages of this trend, I would argue that its disadvantages are more significant. Phrase number 2. Third, although some benefits can be seen from the phenomenon,
The drawbacks are more significant. Phrase number 4. While there are some drawbacks of this trend, I would argue that the advantages more than compensate for any disadvantages. ये phrase का हमने इस्तेमाल किया था introduction में. I hope you recall that. Or last, despite some obvious disadvantages of this trend, I believe that they are outweighed by the advantages. अब यहाँ पे disadvantages का advantages करना, ऊपर नीचे करना, वो आपके ऊपर है. But you can memorize any one of these phrases जो आपको अच्छा लगता है. You can utilize this in your any essay in which you are asked about whether advantages outweigh disadvantages. Any questions, any doubts, and I hope this is clear. ये अच्छे phrases है, मैं चाहूंगा आप इसका इस्तेमाल करें in your essay. Just go through it. शांति से, take your time students and let me know if you have got any doubts. क्लियर हो जाना चाहिए. कोई भी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे है तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ऐसा ही करना है मुझे. That's how I should work. Clear everybody? Sure? Yeah, I'll be sharing this PPT, don't worry. Clear? Okay, great. अब मैं चाहूंगा if it is convenient to you, I hope you people have written the essay in the same way that it is kept over here. Okay, great. Now let us try to let me share with you new things today. बहुत अच्छी चीज मैं आप लेने वाला हूँ. I'm going to take a summary in reading. So many students were asking कि सर हमें summary चाहिए, summary में पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है. So I'm going to share that part today. So it is very very important. Just remain with me. Let me give you a new share. Okay, can you see a new slide? Yes or no, everybody? Very very important. Don't run away. Very good, very good. So I hope you people know जो आज अभी हमने किया that was basically IELTS राइटिंग, जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कैसे लिखा जाए ऐसा उसका ऐसे के बारे में हमने डिस्कस किया. I am now going to discuss today a very important part of your IELTS reading, which is what we call as summary completion. आपको पता होगा many of you might be doing the reading. जिनको नहीं पता है तो let me explain you कि summary क्या होता है. For example, this is how the summary of your reading is going to look like. देखिए जहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, you can see on your left hand side a paragraph is given to you, and on the right hand side there are questions starting from 36, 37, 38, 39 and 40, and there are blanks given over here. See, आप देख सकते हो blank है. So what you need to do is that you need to fill in these gaps by going to the paragraph given to you. Now, summary in IELTS sometimes becomes very difficult for the students and it is very time consuming as well. So I thought of taking it once again. Now, summary जो होती है IELTS के reading में, it is of two types. Summary with a box. So, summary with a box में क्या आता है? A paragraph is given to you and following that paragraph you are given a summary like this. मतलब summary होती क्या है? अगर पैराग्राफ आपका 750 वर्ड्स का होता है, 700 वर्ड्स, 500 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है या फिर जो भी वर्ड्स का होता है, समरी बहुत छोटी हो जाती है. इट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द एंटायर पैसेज और वो छोटे 5 या 6 लाइन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी होती है. बेसिकली इट इज द समरी, मतलब समराइजेशन, स्कीमिंग, स्कैनिंग, आई मीन the entire summary of the entire passage. It takes care of most of the important information of the passage. Now summary is of two types. First, summary with a box. मतलब नीचे जो है आप देख सकते हो बॉक्स दिया है wherein you are given words. ये जो वर्ड्स होते हैं दिस आर द वर्ड्स दैट यू नीड टू फिल इन. फॉर एग्जांपल 1 है तो एग्जाम में आपको क्या करना है, फर्ज कीजिए कि 1 का आंसर है बी, तो आप एग्जाम में अपने आंसर शीट में 1 के सामने लिखोगे बी. वैसे ही अगर सेकंड है उसका आंसर सी है तो यू विल बी राइटिंग सी इन योर एग्जाम. नाउ मेक श्योर दैट यू शुड नॉट बी राइटिंग डिफिकल्ट. मतलब आपको डिफिकल्ट, अगर 1 का आंसर जो अगर कॉम्प्लेक्स है मतलब बी है, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज यू ओनली नीड टू राइट द वर्ड्स अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी. यहाँ पे जो है दिस इज बेसिकली समरी विथ ए बॉक्स. समरी विथ ए बॉक्स, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, ऊपर देखो लिखा है कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए टू जी. तो यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है कि आपको ए टू जी में से ही लिखना है. सो इवन इफ यू आर राइट आंसर इज राइट, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपने बी लिखा नहीं है और कॉम्प्लेक्स लिखा द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर.
यहां पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि समरी विथ ए बॉक्स जो आता है उसमें जो वर्ड्स आते हैं दे आर गोइंग टू बी ईदर सिनोनिम्स, मोर और लेस द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन द पैसेज। मतलब ये अगर आपका पैसेज है तो इसमें से ये सिनोनिम्स वर्ड्स है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी टाइप की जो समरी आती है जहां पे बॉक्स नहीं दिया जाता है, यू नीड टू डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ में से ही आंसर निकालने हैं। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहां पे आपको इसमें से लेने हैं तो देर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि ग्रामर ऑफ दैट वर्ड कुड हैव बीन चेंज्ड। जैसे कि फर्स्ट करो कि एग्जाम में पैराग्राफ में दिया होगा डिफिकल्टी, तो यहाँ पे डिफिकल्ट कर लिया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल है तो उसके अलावा कुछ और दिया होगा, फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे ऐसा है कि यू नीड टू डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रामर व्हेन यू कॉपी डाउन फ्रॉम द पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द केसेस, you need to copy in the same grammatical sense as it is mentioned in the paragraph. तो यहाँ पे ये फर्क हो जाता है। So I repeat, summary in reading is of two types. First, मैंने बताया वैसे summary with a box, दोनों में पैराग्राफ तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया जाता है एंड फॉलोइंग दैट जिसमें वर्ड्स होते हैं। और दूसरा है समरी विदाउट ए बॉक्स, जिसमें आपको आंसर्स डायरेक्टली पैराग्राफ में से ही ढूंढने हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी, यस और नो? गाइस, इज इट क्लियर बिफोर आई मूव अहेड? क्लियर हो गया? ये रीडिंग है, इट इज समरी विथ ए बॉक्स, समरी विदाउट ए बॉक्स। वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विल बी डूइंग इट वेरी स्लो। ओके, नाउ समरी कंप्लीशन में क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली देयर इन समरी कंप्लीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पहले क्या करेंगे आप, इसकी टेक्निक क्या है, स्कीम द समरी फॉर जनरल मीनिंग। तो पहले आप पैराग्राफ नहीं रीड करोगे, यू आर गोइंग टू स्कीम द समरी। मतलब अगर आपकी ये समरी है तो आप इसको क्या करोगे, यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस, बिकॉज समरी बहुत छोटी होती है। इट डजंट टेक टू मच ऑफ टाइम फॉर यू टू रीड द एंटायर समरी। समरी है, आपका पैराग्राफ नहीं है कि आपको 700-800 वर्ड्स लिखने पढ़ने, यहाँ पे सिर्फ 40 या 50 वर्ड्स ही होंगे, मैक्सिमम 60-70 वर्ड्स होंगे। सो यू नीड टू रीड द एंटायर समरी फर्स्ट, स्कैन द टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। समरी में एक चीज यहां पे रह जाती है कि समरी पढ़ने के बाद उसके कीवर्ड्स को मार्क कर दो। सो व्हेन यू आर रीडिंग द समरी, ट्राई टू लोकेट द कीवर्ड्स। और अगर आपने पेन और पेपर टेस्ट दिए तो आप उसको पेंसिल से मार्क कर सकते हो। इफ यू आर गिविंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देन ऑल्सो यू कैन मार्क, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मार्किंग। इन बोथ द केसेस यू कैन मार्क। स्कैन द टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बाद में आप पैराग्राफ को रीड कीजिए, आपने जो कीवर्ड्स मार्क किए उसको और पैराग्राफ में जो कीवर्ड्स है उसके साथ कंपेयर कीजिए। सिनोनिम्स हो सकते हैं और पैराफ्रेजिंग भी हो सकता है। ओके, अब करना कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स इज दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर समरी, पर्टिकुलरली समरी विथ ए बॉक्स अगर है, तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद ट्राई कीजिए कि अगर ये आंसर होता, अगर मैं खुद उसका आंसर देता तो क्या देता। I repeat, very very important for you to understand. Before you jump onto the paragraph, it is important that अगर समरी आपके पास आती है तो ट्राई कीजिए कि अगर मैं खुद ही उसका आंसर देता तो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपका थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज इज गोइंग टू मेक अ मेजर रोल। सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये बाजू में अगर नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर वर्ब है तो उसके पीछे एडवर्ब होना चाहिए। इज, एम, आर, वॉज, वेयर है, इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम करेगी while you are doing the summary. So let me tell you, your knowledge of parts of speech, that means नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इसका नॉलेज एंड एक्टिव पैसिव वॉइस का थोड़ा सा नॉलेज, ये अगर आपके पास होगा तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डज नॉट मीन कि ये नहीं नॉलेज है तो आप नहीं कर पाओगे, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू गॉट द नॉलेज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट विल बेसिकली हेल्प यू टू डू द समरी पार्ट मच मोर इजियर, इन ए मच मोर इजियर मैनर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका सेंटेंस वर्ड ज्यादातर होता क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स मतलब आपको ऐसा होगा कि यही आंसर होगा, बट बिकॉज द आंसर इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है देन दैट आंसर कैन नॉट बी द राइट आंसर। तो समरी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि व्हेन यू पुट द आंसर, यू शुड नॉट ओनली फाइंड आउट द आंसर, बट व्हेन यू पुट द आंसर इन द समरी, यू शुड मेक श्योर दैट दैट आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स के लिए फ्रेजेस भी आपको दिखाने पड़ेंगे। नंबर 1, don't spend too much of time looking for the answer to one question. If you can't find it,
मार्क व्हाट यू थिंक इट माइट बी एंड मूव ऑन। एक क्वेश्चन पे, ये सिर्फ ये जो चीज है, ये सिर्फ IELTS के समरी पे नहीं, किसी भी टाइप पे क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम आप ले रहे हो, 2 से ज्यादा 2.5 मिनट, you should move on to the next question. Okay, the answers normally come in the same order as the question. I repeat, summary में 99.99% cases में the answers are going to come in the sequential order. इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 5 के आप अगर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो तो सेकंड के बाद ही थर्ड का आंसर आएगा, थर्ड के बाद ही फोर्थ का आंसर आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you get a list of words, think about the ones that can't be the correct answer. कभी कभार इसको हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी कहते हैं. अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं है तो आप ये भी उल्टा भी जा सकते हो. यू कैन ऑल्सो थिंक कि इसका आंसर ये नहीं है तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता. तो ऐसे इग्नोर करते करते यू कैन ऑल्सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द राइट आंसर. आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबडी एंड इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन लिसनिंग और रीडिंग. whenever you are unsure of what the right answer could be, you can always go the other way out. आप ये कर सकते हो कि आप उल्टा जा सकते हो. अगर ये आंसर नहीं है तो फर्ज करो कि कौन सा आंसर नहीं आने वाला है. ये तो मुझे पता है कि ये आंसर तो नहीं आने वाला. ऐसे ऐसे एलिमिनेट करते करते also you can move on to the right answer. Very very important for you to understand. Now parts of speech मैं लेने वाला नहीं हूं. I am not going to take parts of speech today, but I'm just going to give you a brief out of parts of speech. You know that, do you want me to take in detail parts of speech, or is it fine if I take it, a bit in a faster manner, because I'm not going to take it fast, in detail. Yes, you want me to take parts of speech, or is it fine? So I'll just take it faster. You just need to have the knowledge of this parts of speech before we go on to the summary part. तो parts of speech में इतना याद रखना है, noun, adjective, pronoun, verb. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. noun मतलब इट्स अ वर्ड यूज्ड टू शो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बाद में एडजेक्टिव जो नाउन के पहले इस्तेमाल होता है. इसकी एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है. आई हैव टेकन गिवन अ वीडियो, सो यू कैन रिफर टू दैट वीडियो वंस अगेन. प्रोनाउन इज बेसिकली द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. जैसे कि राम इज अ ग्रेट किंग, ही इज इंटेलिजेंट. ही के बदले, राम के बदले हमने ही का इस्तेमाल किया. वर्ब यू ऑल नो is a word that shows action or state. Then comes एडवर्ब. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के पहले लगता है. फॉर एग्जांपल वर्ब के बाद लगता है. एडजेक्टिव होता है वो जनरली नाउन के पहले लगता है. जैसे कि राम इज रनिंग फास्ट, तो इज रनिंग इज ए वर्ब और फास्ट जो है दैट इज एन एडवर्ब. इट इज बेसिकली डिफाइनिंग द वर्ब. कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ता है, जैसे कि राम रैन फास्ट, राम एंड लक्ष्मण आर कजिन्स. preposition बहुत इंपॉर्टेंट है. preposition is a word that shows the relationship between two nouns. जैसे कि राम is in the garden, so you have got two nouns, राम and garden. उन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसको हम बोलेंगे in, that is preposition. The laptop is on the table, very very important. laptop is on the table, तो laptop और table दोनों noun है, उनको जोड़ने वाला जो word है वो है on. so this is what we call as preposition. और interjection जो ज्यादा काम आता नहीं है, but you can still remember it. interjection is a word that shows sudden feeling. जैसे कि example, oh stop here, तो oh जो है वो है interjection. So I repeat, there are 8 types of parts of speech. First one is noun, adjective, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. Okay, is it clear everybody? Yes or no? Understood? Okay, now let me go through the most important thing. आपके पास ये चीज है. Now this is very very important, all of you. This is very important. I am given on the right hand side is your paragraph and on your left hand side is your summary. आपको 1 2 3 4 5 के आंसर्स ढूंढने हैं. But before we do that, can you tell me this is summary with a box या summary without a box? Can you tell me students, ये summary क्या है? With a box है या without a box है? Yes guys, everybody. It is without a box. Options आपको नहीं दिए गए हैं, isn't it? You are not given the options. तो यहाँ पे क्या चीज का ध्यान रखना है? What you need to understand is you need to directly write the answer from the paragraph. आपको पैराग्राफ में से ही आंसर ढूंढने हैं. नंबर 1. और एक इंस्ट्रक्शन भी दी है यहाँ पे, चूज वन वर्ड ओनली. चूज वन वर्ड ओनली मतलब आपका जो आंसर होगा is going to be only of one word. Now I am going to give you something like 2 or 3 minutes to go through it and get me the answer of 1 2 3 4 and 5. Your time starts now. 3 to 4 minutes only. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू रीड दिस समरी. ये पहले रीड करोगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ 1 2 3 4 and 5. चलिए, लेट मी सी.
Your time starts now. Ife is the name of a place. Ife जो है वो name of the place है. IFE. Write your answers in your notebook. Okay. Many of you have started, giving me the answers, but I don't want anyone to leave. This is very, very important. आपको तय करना है कि मुझे IELTS वापस देनी है या नहीं देनी है. हर एक चीज मैं सिखा रहा हूँ. These are very important things, so don't leave, please. Let me know you when you are done. Keywords से जाओ. Go through keywords. Very, very important. Go by keywords. Okay. Let me know when you are done. Okay, fine. Shall I start now, students? Shall we go for the answers? Let me know. If you want time, I can give. Don't worry. I shall be taking care of everybody. Okay. Now let me tell you exactly. For example, I hope you have read the entire summary which is given at the on your left hand side. Yes or no? Okay. अब क्या करना है आपको? Try to find out. अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. मैंने क्या किया? I have marked out the keywords. See on your left hand side, what I have done is I have marked out the keywords. मतलब एग्जाम में आप क्या करोगे? You are going to underline those keywords in your on your reading paper. तो मुझे ऐसा लगता है adjoined. For example, metals such as floors in buildings were made up of bits मतलब pieces.
there are many surviving examples of deaths, ठीक है, and the population lived on animal products and crops such as. So let us first of all take the first one, adjoined मतलब बाजू में, adjoined का मतलब बाजू में, Ife perched at the edge of Nigeria's forest. So the state of Ife adjoined the deaths in Nigeria. सब कुछ आ जाता है तो एक चीज बाकी रह जाती है, that is basically forest. So answer of first is going to be forest. I hope you understood students. Let me know if you are not able to understand. मैं सीधा यहाँ पे कीवर्ड्स धीरे धीरे करके जा रहा हूँ. तो adjoin the forest in Nigeria पहली ही लाइन में है. Edge का मतलब adjoin बाजू में, ठीक है. And traded a variety of goods including metals. अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र है, आइवरी, गोल्ड एंड पेपर. पेपर आपको पता है वो एक स्पाइसेस होता है, यहाँ पे मेटल्स लिखा है, तो जाहिर है द आंसर कैन नॉट बी आइवरी एज वेल बिकॉज आइवरी इज नॉट अ मेटल, इजंट इट? इट्स बेसिकली नॉट अ मेटल. द ओनली वर्ड दैट कम्स इज बेसिकली गोल्ड. तो सेकंड का जो आंसर है इज गोइंग टू बी गोल्ड. आई होप इट इज आइवरी एंड गोल्ड दोनों लिखा तो आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग. पहला तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने देखे काफी लोगों के आंसर्स 2 वर्ड्स है. इट इज वेरी स्पेसिफिकली मेंशन इन द इंस्ट्रक्शंस दैट यू आर सपोज्ड टू राइट ओनली वन वर्ड. कितनी बार आप इसको मिस करोगे? I repeat, it is very very important. So it is very very important that you know ये आप इसको रीड करो कि पहले एक वर्ड ही है, तो इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड है तो एक वर्ड ही लिखना है. तो मेटल्स देखिए यहाँ पे लिखा है, सो वेराइटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेटल्स सच एज गोल्ड. सो सेकंड का आंसर आएगा गोल्ड. अब देखो फ्लोर्स कहाँ पे है. फ्लोर्स इन रिलीजियस, आई एम रीडिंग द समरी, फ्लोर्स इन रिलीजियस बिल्डिंग्स वर मेड फ्रॉम बीट्स ऑफ. तो देखिए यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, बाय AD 1300 its world capital was at the peak of its wealth with many shrines featuring elaborate payments made of pieces of pottery. उनके जो पेमेंट्स थे वो किससे बने हुए थे? मेड ऑफ पीसीस ऑफ पॉटरी. अब देखो यहाँ पे पीसीस के मतलब यहाँ पे देखो ये जो बीट्स है इज समवॉट यू नो सिनोनिम ऑफ पीसीस. तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लोर्स इन रिलीजियस बिल्डिंग्स वर मेड फ्रॉम किससे बने हुए थे? मेड ऑफ पीसेस ऑफ पॉटरी. तो क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड में पीसेस का बिट्स आ जाता है एंड आंसर इज गोइंग टू बी पॉटरी. तो तीसरे का जो आंसर है इज गोइंग टू बी पॉटरी. इज इट गेटिंग क्लियर? देयर आर मेनी सर्वाइविंग एग्जांपल्स ऑफ डेस्क मेड ऑफ ब्रास एंड टेराकोटा. कोई ऐसी चीज जो ब्रास और टेराकोटा से बनी हुई है. तो यहाँ पे देखो made of pieces in pottery and rich tradition of creating brass and terracotta sculptures. क्या बना है? क्या बना है? मेड ऑफ किस? ये स्कल्पचर्स जो है वो ब्रास और टेराकोटा से बना हुआ है, और यहाँ पे उल्टा लिखा है मेड ऑफ ब्रास एंड टेराकोटा. तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ का आंसर इज गोइंग टू बी स्कल्पचर्स. नाउ रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे स्कल्पचर्स आप लिखते हो तो इसी तरह से लिखना है. यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज एग्जैक्टली इन प्लूरल फॉर्म. अगर आपने सिर्फ स्कल्पचर लिखा है, आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. तो आपका यहाँ पे स्कल्पचर्स होना अनिवार्य है. एंड फाइनली I am reading the fifth one. The population lived on animal products and crops. तो यहाँ पे देखो लिखा है artisan population appears to have been based upon small livestock. तो देखो livestock का मतलब होता है animal products, तो वो चीज आ जाती है. And the cultivation of vegetables. तो यहाँ पे crops such as answer is going to be vegetables. Understood or not? So this is how the answer is going to be look like. ये आपके आंसर्स है, इसको जरा देख लीजिए. एंड इफ यू गॉट एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? शांति से टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ओनली राइटिंग इन वन वर्ड. एक वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है आपको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्लियर? सेल आई मूव ऑन टू द सेकंड. आइवरी का मतलब होता है जो हाथी के दांत होते हैं उसको आइवरी कहते हैं. खुशबू. इट इज नॉट ए मेटल. क्लियर हो गया एवरीबडी? यस और नो? Shall we move on to the next? Shall we move on to the next summary? थक तो नहीं गए ना? Yeah, I hope you are not tired. Shall we move on to the next summary? Okay, great. देखो इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा स्टूडेंट्स. Very very important that you know you take this, you know, don't take this for granted. Okay, let us go for the next one. वापस करते हैं. चलिए the second one. 1 2 3 4 शांति से take your time.
इंस्ट्रक्शन में लिखा है यू शुड नॉट बी राइटिंग मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स या 1 वर्ड, दोनों में से कोई भी एक चलेगा. Let me know when you are done. Okay, 1 minute. You can give me your answers. I mean, you're anyhow writing privately to me. You can give your answers. 1, 2, 3, 4. Okay, so let us try to do it now. Let us try to check the answers now. Everybody? Okay, now let us try to do this. Okay, now over here, this is basically these are the keywords, very important. ये आपके जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो keywords है उसको मार्क किए हैं. The main habitat of the Siberian tiger is low mountainous areas. ये USSR का मतलब क्या होता है? Can you explain what is USSR? What is USSR? United States of Soviet Russia. आपको शायद पता होगा कि USSR पहले रशिया था, जैसे USA था वैसे USSR था, but then it got disintegrated and it turned up. देखते रशिया के तो काफी पार्ट्स है, साइबेरिया है, ये है, वो है. So in that case, USSR basically was previously known as United States of Soviet Russia. Exactly. So the Siberian, यहाँ पे लिखा है, let me read the summary for you. The main habitat of the Siberian tiger, ध्यान से सुनो इसको पहले. The main habitat of the Siberian tiger is in low mountainous areas of the former. तो पहले mountainous already दिया हुआ है यहाँ पे. So पहले क्या था? पहले it is basically the USSR. So answer of first is going to be the USSR. Very important for you to understand. Mountains नहीं आएगा, काफी लोगों ने mountains लिखा है. So answer is going to पहले क्या था? वो former क्या था? देखो लिखा है what was the USSR, isn't it? What was the USSR? तो वही तो former हुआ. So answer of first is going to be USSR. काफी लोगों ने मैंने देखा कि the USSR लिखा है. The USSR is not the right answer. Answer is only going to be the USSR. Okay. Now it hunts a variety of animals. और यहाँ पे लेके it likes to eat. Hunts का मतलब वो जाहिर है hunt करता है तो खाता ही होगा. तो यहाँ पे 3 options है आपके पास, wild boar, wapiti and moose. Now you can write any one of these answers, but do make sure that you don't write each one and every one of this, because यहाँ पे लिखा है कि no more than 3 words.
So you can write wild boar as the answer of second one, wapiti or moose. So second का answer wild boar, wapiti or moose. I hope it is clear to you. It is similar genetically to the, ये एक genetically, तो यहाँ पे कीवर्ड जो है वो genetically, तो देखिए यहाँ पे आता है, this is where genetically is, यहाँ पे देखो genetically it is closely linked to the now extinct Caspian tiger, उससे दिखता था, so यहाँ पे लिखा है it is similar genetically to the, थर्ड का आंसर आएगा कैस्पियन टाइगर। और मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा, सारे आंसर्स आप कैपिटल्स में ही लिखोगे, you are going to write every answers in capitals in your real examination. Okay, so answer of third is going to be Caspian tiger. एक चीज आपको ये भी देखनी है, ऊपर देखना है कि क्या यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉट मोर देन 2 वर्ड्स है, हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल 2 वर्ड्स है तो आप कैस्पियन टाइगर लिख सकते हो, isn't it? So answer of this is going to be Caspian tiger. This is very important for you to understand. अब उसके बाद ये यहाँ पे काफी लोगों ने गड़बड़ की है इन द फोर्थ वन, रशियन, यहाँ पे फुल स्टॉप है, थर्ड के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है, और एंड आई एम नाउ गोइंग टू रीड, रशियन कंजर्वेटिव्स वांट टू डैश द नंबर ऑफ वुल्स बाय प्रोटेक्टिंग द साइबेरियन टाइगर। मैंने देखा काफी लोगों ने प्रोटेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे देखो लास्ट लाइन पढ़ो आप, रशियन कंजर्वेटिव्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द साइबेरियन टाइगर्स बिकॉज दे कीप द वुल्फ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। रशियन के कंजर्वेटिव्स है वो साइबेरियन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइबेरियन टाइगर जो है वो वुल्फ की पॉपुलेशन पे लगाम देता है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर्स वुल्फ को खा जाता है, इजंट इट, उसको मार देता है, तो उसी के कारण साइबेरियन टाइगर्स जो है वो वुल्फ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या आएगा फोर्थ में, रशियन कंजर्वेटिव्स वांट टू डैश, वुल्फ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं वो लोग, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं आएगा, प्रोटेक्ट द नंबर ऑफ वुल्व्स, क्योंकि प्रोटेक्ट तो साइबेरियन टाइगर आएगा, isn't it? So answer of fourth is going to be control. So Russian conservatives want to control the number of wolves by protecting the Siberian tiger. Any questions, any doubts students? Under control नहीं आएगा इशिता, under control is not going to come, वो गलत हो जाता है, आपको सिर्फ कंट्रोल लिखना है, want to under control नहीं, to control the. Any questions, any doubts students? Yes, so this is how the answers are going to be. जरा एक बार गौर से देख लीजिए तो पता चल जाएगा क्लियर, शांति से, टेक योर टाइम। दिस आर द डार्क वंस आर द आंसर्स, सेकंड में वाइल्ड बोर, वेपिटी और मूस में से कोई भी एक आंसर आएगा, check it out. Any questions, any doubts? Yes Subhang, it will be okay to write anyone, yeah, from 3 anyone you can write, yeah exactly, you can write either wild boar, wapiti or moose, anything you can write Subhangi. Okay, yes, any students, any questions, any doubts in this? Clear हो रहा है, भले किस आपने पहली बार किया है तो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, understood now? Shall we move on to the, yeah, very good, most of you people are able to understand. Okay, एक और करना है या नहीं करना है? Shall we do one more? Very good, चलिए एक और करते हैं, मजा आएगा, don't leave, one more, चलिए, okay great. अब यही है, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, लेट मी मेक योर जो लाइफ यू नो क्लियर। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, यही पैराग्राफ में आपको समरी विथ ए बॉक्स करते हैं, चलिए लेट अस सी, नाउ लेट मी सी हाउ यू डू इट। वही पैराग्राफ है लेकिन इसमें बॉक्स है, देखो नीचे ऑप्शंस दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब बताओ मुझे आंसर क्या है, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 to 4 मिनट्स, जल्दी से, डोंट रन अवे, मजा आएगा। आपको नीचे से आंसर, जो लोग नए पहली बार कर रहे हैं उनको नीचे से आंसर लेना है, यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम ए टू आई and you also need to make sure that it is grammatically correct. Yeah, you need to write A to E, आपने A to E करना है, you need to select either from A to I, don't write, अगर आपका आंसर बिगर है तो बिगर नहीं आएगा, आंसर ए आएगा।
आपको 1 2 3 4 ही आंसर है, ओनली 4 आंसर शुभांगी. We'll check with the answers, don't worry. Let me know when you are done. Done, students? वही पैराग्राफ है, बस आपको आंसर्स इसमें से लेने हैं. Okay, let us check the answers now. Okay, great. Now the main, let me read the summary first of all. Let me read the summary. Okay, let us check the answers, whether many of you have given the right answers, many of you have given 1 or 2 incorrect answers. Let us see what the answer is. The main habitat of the Siberian tiger is in low mountainous deaths. अब देखिए यहाँ पे देखो, Siberian tiger can be found in what was the USSR and seems to live mainly on the lower slopes of mountains. तो ये क्या क्या आएगा? Just imagine what could be the answer. Let us first of all take the first one. The main habitat of the Siberian tiger is in low mountainous. यहाँ पे क्या आएगा? वन में देखो, it cannot be bigger. You can always, in this. देखिए समरी विथ ए बॉक्स में फायदा ये है, समरी विथ ए बॉक्स में फायदा ये है कि आप काफी ऑप्शंस निग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, वेरी इजी. तो बिगर नहीं आएगा, इट कैन नॉट बी क्लोजली, इट कैन नॉट बी प्रोटेक्ट, इट कैन नॉट बी क्लोज इन माउंटेनस एरिया. बट एरिया इसलिए नहीं आएगा क्योंकि माउंटेनस काफी जगह है, तो एरिया एक ही जगह नहीं आएगा. सो आंसर कैन नॉट बी एरिया. एरियाज होता तो हो सकता है हैवियर, प्रोटेक्टिंग नहीं आ सकता, लाइटर नहीं आ सकता. सो आंसर इज गोइंग टू बी रीजियंस. So answer of 1 is going to be regions. आपने regions नहीं लिखना है, you need to write I. So 1 का आंसर जो होगा, it is going to be I. Any questions on that, students? Okay, आगे बढ़ते हैं. The female is dash than the opposite sex. अब यहाँ पे देखिए, it likes to eat. हाँ, the male tiger weighs more than the female and is bigger than any other species of tiger. यहाँ पे काफी लोगों ने गड़बड़ की होगी. पैसेज में लिखा है कि मेल टाइगर जो है उसका वजन जो है इज बिगर देन द more than the female and is bigger than the other species of tiger. तो यहाँ पे देखिए the dash female is पूरा उल्टा कर दिया है, पूरा उल्टा कर दिया है. तो अंदर पैराग्राफ में लिखा है कि मेल टाइगर का वजन फीमेल टाइगर से ज्यादा है. तो यहाँ पे देखो हेवियर भी दिया है, आंसर इज ऑल्सो गिवन हेवियर. तो देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट मेनी ऑफ यू माइट गो फॉर हेवियर, लेकिन वो उल्टा है, यहाँ पे फीमेल कर दिया है. सो द फीमेल इज, आंसर इज गोइंग टू बी लाइटर, isn't it? क्योंकि वो लिखा हुआ है कि it is sees lighter than the male tiger. So answer of second is going to be lighter than the opposite sex. Okay, now Caspian tiger. तो देखो यहाँ पे है, the Caspian tiger is dash genetically to the Siberian tiger. So यहाँ पे देखो लिखा है genetically it is closely linked to the now extinct Caspian tiger. अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो सकती है? What is the answer? Can you tell me what is the answer? बी क्यों नहीं आएगा? वाई बी इज नॉट गोइंग टू कम? बिकॉज देखो बी अंदर दिया हुआ है. वाई बी कैन नॉट बी द राइट आंसर? यस स्टूडेंट्स, वाई बी इज नॉट द राइट आंसर? द कैस्पियन टाइगर इज क्लोजली जेनेटिकली टू द साइबेरियन टाइगर. वो क्यों नहीं आएगा? क्लोजली भी दिया हुआ है देखो, और अंदर भी क्लोजली दिया है, देखो अंदर क्लोजली दिया है, जेनेटिकली इट इज क्लोजली लिंक्ड. क्योंकि क्लोजली वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. और आपको परेशान करने के लिए देखो उन्होंने ऑप्शंस में भी क्लोजली दिया हुआ है, ताकि यू कैन कमिट ए वेरी ब्लंट बिग मिस्टेक ओवर हियर. You can very easily go for closely, क्योंकि अंदर भी closely दिया हुआ है. So you need to make sure students कि वो grammatically सही है कि नहीं. अगर आप ऐसा लिखते हो the Caspian tiger is closely genetically, वो गलत है, क्योंकि दो adverb आ जाते हैं, closely भी adverb है और genetically भी adverb है. Cannot, two adverbs cannot come together in that way. तो answer is going to be, क्या आएगा आंसर? It is going to be close. So Caspian tiger is close genetically to the Siberian tiger. तो थर्ड का आंसर क्लोज आएगा. नाउ यहाँ पे भी गड़बड़ होने की संभावना है. रशियन कंजर्वेटिव्स आर डैश द साइबेरियन टाइगर. तो यहाँ पे देखो रशियन कंजर्वेटिव्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट साइबेरियन टाइगर्स. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से सुने आप, क्योंकि यहाँ पे आर है, आर है, तो इसका मतलब क्या होगा? आर के बाद क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आपको पता है ग्रामर का एक नॉलेज है कि इज एम आर वॉज वेयर है, तो उसके पीछे आईएनजी फॉर्म लगेगा. यस और नो? यू नो दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म. वेरी गुड.
तो भले ही यहाँ पे प्रोटेक्ट भी दिया हो, देखो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे भी पैराग्राफ में भी प्रोटेक्ट दिया है, बट आंसर आएगा प्रोटेक्टिंग, क्योंकि इट इज बेसिकली प्रीसीडेड बाय आर, तो पीछे आईएनजी फॉर्म लगेगा, भले ही प्रोटेक्ट है और आंसर भी अंदर प्रोटेक्ट पैराग्राफ में दिया है, बट इट इज नॉट ग्रामेटिकली फिटिंग। रशियन कंजर्वेटिव्स आर प्रोटेक्ट लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, सो आंसर प्रोटेक्टिंग होगा। सो आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी जी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू, ये होगा आंसर्स, ये देखिए, वन का आंसर आई, सेकंड का आंसर होगा एच, थर्ड इज डी एंड फोर्थ इज जी। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ऑलमोस्ट पौने 10 बजने को आए हैं। सो लेट मी, हम लोग इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई एम गोइंग टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस समरी नेक्स्ट टाइम, विल बी टेकिंग डिफिकल्ट वंस नेक्स्ट टाइम, क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस लेक्चर वाज आई मीन important and informative for you. Okay, great. Thank you so much, students. So let me, yeah, thank you, students. Thank you. Good night. Okay, thank you, students. Thank you, students.